Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to continue with the chapter Congruence of Triangles. Up to question 3 we had completed. We will start with question 4. तो क्या है question 4 में? Let's see. Prove that triangle AOB and triangle AOC in the following figures are congruent to each other. The figures are given. We have to prove that they are congruent to each other. Let's see this figure. Here it is given as two triangles which are inverted. तो यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं AOB और AOC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? सो गिवन इज दैट OB and OC are equal, okay, and it's a right angled triangle. Both are right angled triangle, right angled at O, and the common side is OA. So side OA is common to both the triangles. OC and OB are equal, that means side side हो गया. और यहाँ पे included angle है, ये है AOC और AOB. Therefore by SAS congruency criterion we can prove that the triangle AOB and triangle AOC are congruent to each other. तो लिखते हैं first solution. OC is equal to OB given. Angle AOC is equal to angle AOB, that is 90 degrees here. Perpendicular है AO to BC और 90 degrees मार्क किया है. And AO is the common side. Therefore यहाँ पे side angle side. Therefore by SAS side angle side criterion triangle AOB is congruent to triangle AOC. That is triangle AOB is congruent to triangle AOC. ठीक है, तो ये हो गया सब क्वेश्चन A. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज B. यहाँ पे भी प्रूफ करना है कि एंगल triangle AOB is congruent to triangle AOC. What is given? It is given in the figure that AB is equal to side AB is equal to AC. Okay, angle AOB is equal to angle AOC because 90 degrees है. Angle B must be equal to angle C. Why? Angles corresponding to equal sides are equal. तो similarly अगर दो angles equal हैं तो third angle भी equal होना चाहिए. That means angle BAO is equal to angle CAO. Also we know that the sum of angles of a triangle is equal to 180 degrees. ठीक है. Now which criterion we will use? We'll use एंगल साइड एंगल. ठीक है, एंगल साइड एंड एंगल, दो एंगल्स इक्वल हैं और इंक्लूडेड साइड इक्वल है. दैट मीन्स हेंस बाय ASA क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC. AOB is equal to AOC. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर इज गिवन हियर wherein angle B and angle C are given as 60 degrees. AOB and AOC 90 degrees. ठीक है. Now we'll write angle B is equal to angle C is equal to 60 degrees, which is given. BOA, yeah, you can write AOB is equal to AOC, which is equal to 90 degrees given. AO is the common side. That means by angle side criterion triangle AOB is congruent to triangle AOC. Thus triangle AOB is congruent to triangle AOC by angle side, that is AAS criterion. ठीक है. नेक्स्ट इज D. D में क्या है? D में है, यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से एंगल्स दिए हुए हैं. वी नो दैट यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं AOB एंड AOC. सेम वी नो दैट ABO, दैट इज ABO प्लस AOB प्लस BAO is equal to 180 degrees. That is sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degrees. We have got angle ABO as 55 degrees, angle AOB as 90 degrees. तो थर्ड एंगल BAO क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. 55 plus 90 is 145 plus BAO is equal to 180 degrees.
BAO इज इक्वल टू 180 माइनस 45. 180 माइनस 145 क्या होगा? एंगल BAO इज इक्वल टू 0 माइनस 5 नहीं कर सकते, बोरो. 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 4 इज 3, 1 माइनस 1 is 0. That is 35 degrees. That means angle BAO is equal to 35 degrees. तो ये जो एंगल है वो 35 डिग्रीज है. तो दूसरे ट्रायंगल दैट इज AOC में क्या है? ऑलरेडी गिवन है. OAC is 35 degrees. और we can find out that we have already got this as 55 degrees. That means सिमिलरली यहाँ पे 35 डिग्री से 90 डिग्रीज, तो ऑब्वियसली ACO मस्ट बी 55 डिग्रीज. करेक्ट. यहाँ पे देखिएगा CAO प्लस AOC प्लस एंगल C या एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. इन प्लेस ऑफ दिस CAO विल पुट 35 डिग्रीज, AOC में 90 डिग्रीज प्लस एंगल C फाइंड आउट करना है. तो एंगल C क्या होगा? 90 प्लस 35 इज 125. तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125, क्योंकि इसे हमें राइट हैंड साइड में लेकर जाना है. प्लस है तो माइनस हो जाएगा. तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125. 0 माइनस 5 नहीं कर सकते, बोरो. 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5, 1 minus 1 is 0. That means angle C is equal to 55 degrees. So we got angle C as 55 degrees. We know that angle B is also 55 degrees. That means all the three angles are equal here. ठीक है. पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरियन यूज करना है. तो एंगल B is equal to angle C. Angle BAO is equal to angle CAO, 35 degrees. AO is also a common side. Now this AOB is congruent to AOC by angle side criterion. Which angle? Angle B, angle BAO. यहाँ पे angle C, angle CAO. ठीक है. तो ये दो एंगल्स हो गए और साइड जो कॉमन है वो है AO is the common side. Therefore by AAS criterion, angle side criterion, triangle AOB is congruent to triangle AOC. ठीक है. बहुत ही इजी है, सिंपल वे में करना है. वी शुड नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. ओके. एकदम सिंपल वे में प्रूव करना है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई सब क्वेश्चन. यहाँ पे एक ABOC is a four-sided figure here, wherein it is shown that AB is parallel to CO. AB is equal also to CO as well as parallel to CO. तो AB is equal to CO, AB is equal to CO and AB is parallel to CO. Both given. ठीक है. Now AO is the transversal cutting the two parallel lines. ये AB को और CO जो parallel lines हैं उसको कट करता है एक ट्रांसवर्सल AO. तो there are set of angles which are equal. For example, BAO is equal to COA. How? Alternate angles. तो ये दोनों alternate interior angles हो जाते हैं. Now, considering this triangle AOB and AOC, CO is equal to AB. Correct? Already given. BAO is equal to COA. Alternate angles. AO is the common side. Therefore, by side, angle, side criterion, AOC is congruent to triangle AOB. ठीक है. Therefore, by side, angle, side criterion, triangle AOB is congruent to triangle AOC. ये वाला साइड लिया है which is equal given. AO is the common side and these are the two angles which are equal to each other. ठीक है. ये हो गया हमारा सब क्वेश्चन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ में क्या है? यहाँ पे देखिएगा, इट्स अ फोर साइडेड फिगर वेर इन OB इज parallel to CA. It is given. Okay. And
here angle B is equal to angle C, which is equal to 105 degrees. That is also given. Now OA is the transversal cutting the two parallel lines AC and OB. ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं विच आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल AOB is equal to OAC, alternate angles. Now we will see how AOB is congruent to AOC. First, OA is the common side. ठीक है, एंगल जो इक्वल है वो है एंगल B या एंगल OBA ACO, that is 105 degrees, 105 degrees. ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं AOB, ये वाला AOB, और दूसरा है OAC. ठीक है, तो ये है दो ऑल्टरनेट एंगल्स. बाय एंगल साइड, एंगल साइड क्या होगा? ये दोनों AOB and AOC are the two triangles congruent to each other. Hence, triangle AOB is congruent to triangle AOC by angle side criterion. एंगल साइड क्राइटेरियन. ठीक है, ये हो गया हमारा F. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज ABCD is an isosceles trapezium with AB parallel to DC. Prove that AC is equal to BD. AC is equal to BD. That is the diagonals are equal to each other. Okay. ABCD is an isosceles trapezium which is given here. Now what is an isosceles trapezium? Non-parallel sides are equal. AD and BC are the two non-parallel sides. Therefore AD is equal to BC. Isosceles trapezium यानी non-parallel sides equal होते हैं. AD is equal to BC. It is given now. Now angle ADC, that is angle ADC, here angle ADC and angle BCD, those are the base angles of a triangle, base angles of a isosceles trapezium are equal. Therefore ADC is equal to BCD because base angles of a isosceles trapezium. Now if you consider the triangle, in triangle ADC and triangle BCD, AD is equal to BC, ADC is equal to BCD, DC is the common side, it is the base. Therefore triangle ADC is congruent to triangle BCD by side angle side criterion. That is this side and the angle. Side angle side criterion. Now we have to prove AC is equal to BD. That is AC is equal to BD. This is the third side of the triangle ADC and BD is the third side of the triangle BCD. Therefore by corresponding parts of congruent triangles are congruent to each other. That means AC must be equal to BD by CP CTC. ठीक है, therefore AC is equal to BD by CP CTC. ठीक है, hence proved.